हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, आपको मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज 9, जहां पे वी आर डिस्कसिंग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आज दोस्तों वेबिसोड नंबर 4, और दिस इज अ सेकंड थ्योरम दैट वी वांट टू डिस्कस इन दिस ब्रांड न्यू सीरीज 9। ना दोस्तों, हमारी जो हमारी वेबिसोड 3 थी, वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट थ्योरम। आज दोस्तों वी गोना टॉक अबाउट टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस या फिर इक्वल बेसिस and between same parallel lines, so same parallel lines are equal in area. So दोस्तों, we want to discuss, अगर दो triangles दी जाती है, they are drawn in such a way that they have same base or equal bases and they are between same parallel lines, then they must have equal areas. So दोस्तों, this is the theorem and we want to find out how we can prove this theorem. So friends, आइए let us get started. Now, अगर हमें दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है एंड देन द ट्राइंगल्स या तो उनकी बेसिस सेम होगी या फिर दे विल हैव इक्वल बेसिस एंड दे मस्ट बी बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सो दोस्तों, एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ लाइन। चलिए इसे कहते हैं लाइन एल और इसे कहते हैं लाइन एम। सो हमने दो लाइन ऐसे करके ड्रॉ की है सच दैट लाइन एल एंड लाइन एम दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो वी हैव लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, राइट। अभी दोस्तों वी हैव टू ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। सो यहां पे आप गौर से अगर आप देखोगे दोस्तों, सो यू हैव टू कंडीशंस एक्चुअली। दोनों ट्राइंगल की अगर सेम बेस हो, सो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट हाउ टू ड्रॉ दिस। सो आप देखोगे दोस्तों यहां पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्चुअली ड्रॉन अ ट्राइंगल। चलिए इसे कहते हैं सी ए बी। हमारे पास है ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल डी ए बी। सो आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये जो है सी एंड डी, दे आर बोथ ऑन लाइन एल। इसका मतलब है द ट्राइंगल सी ए बी एंड डी ए बी, दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑल्सो दोनों की बेसिस सेम है ए बी। सो यहाँ पे दोस्तों हमें जो थ्योरम है वो कह रही है, देन अगर ऐसा होता है देन ट्राइंगल सी ए बी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी। So this is what the theorem is telling us, कि अगर दो triangles on the same base and between same parallel lines अगर ऐसी होती है, then they have equal area or their areas must be equal. So in this case CAB and DAB both triangles, they must have equal areas. Now दोस्तों, what about our second condition? अगर इसे हम कहते हैं यह है हमारी condition 1. So second condition है दोस्तों, what about equal bases? चलिए इसे draw करते हैं। अगर दो triangles with equal bases, right? So we will get something like this, friends. So मान लीजिए, let us name this triangle PQR और इसे कहते हैं ट्राइंगल ST। मान लीजिए let us call this STU। So हमारे पास दोस्तों now we have drawn two triangles PQR, triangle PQR and STU in such a way, यहाँ पे friends जो है QR is equal to TU, QR is equal to TU, क्योंकि दोस्तों वी आर एक्चुअली नाउ ड्राइंग द सेकेंड कंडीशन इक्वल बेसिस। सो दोनों की बेसिस सेम है एंड बोथ पॉइंट पी एंड एस आर ऑन लाइन एल। सो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल भी दोस्तों दे आर बेसिकली बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एल एंड पी क्यू यू, राइट, एंड दे हैव इक्वल एरियाज। So in this case also दोस्तों what the theorem is telling us is that then the area of triangle PQR, it must be equal to area of triangle STU. So दोस्तों this is what we have to prove. Now एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं at this point दोस्तों, चलिए इसे कहते हैं condition 2. ना अगर आपको टेस्ट में एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है, ये थ्योरम आपको प्रूव करने को पूछी जाती है, सो दोस्तों नाउ आप यू कैन एक्चुअली पिक any one of the conditions and go ahead and prove the theorem. आप you can go ahead and prove कि equal base होने से दो triangle की area same है and you can finish proving the theorem and you will get full marks for it. या फिर आप अगर चाहते हो you can pick the second condition जहां पे you draw the triangle with equal bases, same base नहीं है but they are equal bases and आप you go ahead and prove the theorem. So दोस्तों whether आप condition 1 choose करते हो या condition 2 choose करते हो, you can pick any one and it will be absolutely fine. So कहने का मतलब यह है दोस्तों कि it is not required कि you have to prove both this condition and this condition to actually complete the proof. So with all of that said दोस्तों, so for this presentation, this video, we are going to take this condition and we are going to prove this.
Now the reason दोस्तों why you don't have to prove both conditions is because there is a tremendous amount of similarity between these two conditions. So दोस्तों now चलिए let us now get started with the actual proof. So यहाँ पे दोस्तों what we have done, we have line L. So line L is parallel to AB. We have line L parallel to AB, right? चलिए इसे ऐसे करके let us mark line L, like this. And now दोस्तों what we have is we have a triangle CAB and we have a triangle DAB, right? Now what we do दोस्तों is we do a simple construction here. We actually do two constructions. So हमारी जो पहली construction है दोस्तों that is like this. हम क्या करते हैं, we draw a line BP parallel to AC. मतलब we can always draw a line passing from point B parallel to AC. So ये जो line है दोस्तों this will eventually cut line L somewhere, right? तो मान लीजिए उस पॉइंट को कहते हैं P. So what we have friends is this. We have basically BP. Now BP is parallel to AC. So आप नोटिस करोगे दोस्तों then what we have is ये जो भी ACPB है this is the parallelogram. ACPB जो है ये अभी बन गई है दोस्तों it's a parallelogram. चलिए इसे लिखते हैं short form में, it's a parallelogram like this. Now why is it a parallelogram दोस्तों? Because AC is parallel to BP by construction and CP is parallel to AB because C and P they lie on line L which is parallel to AB. So अगर both pair of opposite sides अगर equal, अगर both pairs of opposite sides अगर parallel होती है दोस्तों then we know it is a parallelogram. And दोस्तों अगर आप गौर करोगे अभी you have BC is the diagonal of the parallelogram. So दोस्तों now what we want to do, somehow we want to find out a relationship between हमारी जो triangle है CAB. How does that relate to our parallelogram ACPB? So हम पता लगाएंगे दोस्तों what is the relationship between these two, and that will help us with the theorem, the proving of the theorem. Then दोस्तों what we do the second half of our construction. यहाँ पे दोस्तों what simply we do, now अभी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं passing through A parallel to DB and cutting line L at Q. So मान लीजिए दोस्तों we have basically drawn AQ जो है दोस्तों now that is parallel to DB. So अगर दोस्तों ऐसा होता है by design, by construction we have drawn AQ parallel to DB. So अगर आप गौर से if you look at the quadrilateral AQDB आप नोटिस करोगे that this is also a parallelogram for the same reason. For the same reason why ACPB was a parallelogram, because in quadrilateral AQDB what you have दोस्तों is that आपके पास again both pairs of opposite sides are parallel. AQ parallel to BD by design, by construction, and AB parallel to QD. So both pairs of opposite sides अगर parallel है, this is a parallelogram. So now दोस्तों and AD is a diagonal of the parallelogram. So now we want to now talk about what is the relationship between DAB and the parallelogram AQDB. So दोस्तों we are going to again closely look at this relationship and especially the area of DAB के साथ area of AQDB. Similarly area of CAB के साथ area of ACPB, इनकी क्या relationship है, and that will help us basically talk about the relationship of ACB and DAB. So दोस्तों this is basically going to be our strategy and now we will jump right into the proof of it. So आइए काम करते हैं, let us now start the actual proof. आपको मालूम है दोस्तों like we always do, we are going to start out by discussing कि what is given, हमें क्या दी गई है. So we have two triangles CAB and DAB. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, you have AB parallel to line L, right? So ये अगर हम कहते हैं ये है हमारी line L और ये है AB. So we have basically two triangles CAB and DAB on the same base AB, in between same parallel lines which is AB and line L. Line L is parallel to AB. So हमें दी गई है that line L जो है that is parallel to AB. This is something which is already given to us. And both C and D they lie on line L. So ये जो दोनों triangle बन गई हैं CAB
and DAB, they have दोस्तों same base AB and they are in between same parallel line L and AB. So this is what is given to us. Next दोस्तों हम क्या करते हैं? Now we talk about what is that we have to prove. हमें क्या prove करनी है इस theorem में? Now we need to prove that area of CAB is equal to area of DAB. This is something also that we have to actually prove eventually in this particular theorem. So दोस्तों now जैसे हमने कहा we will talk about the two simple constructions that we have to do. So हम क्या करते हैं दोस्तों? We draw BP parallel to AC. We draw BP parallel to AC, right? Such that P lies on line L. Similarly, we draw AQ parallel to BD. We draw AQ which is parallel to BD such that Q lies on line L. So those after we have finished our simple construction, now we are starting the actual proof, right? चलिए let us clean this up a little bit. अभी दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा हमने यहाँ पे we have actually intentionally we have highlighted a particular area, a particular space यहाँ पे basically which is quadrilateral ACPB. So अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों quadrilateral ACPB में, so what do you see here, right? आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों that AB जो है that is parallel to CP. क्यों? Why is AB parallel to CP? Because line L is parallel to AB and C and P are points on line L. आपको मालूम है दोस्तों we have always been discussing जब कभी आप geometrically statements लिखते हो you must prove a reason, right? You must provide a reason. So we know that AB is parallel to CP. Why? Because the line L is parallel to AB and C and P are points on line L. Similarly दोस्तों हमें मालूम है that AC is parallel to BP. Why? AC जो है AC is parallel to BP because this is by construction. So what do we get दोस्तों? So we have a quadrilateral ACPB now such that basically quadrilateral with both sides parallel. Now we know that quadrilateral that has both sides parallel is a parallelogram. So इसके वजह से दोस्तों we calling it ACPB a parallelogram because अगर both pairs जैसे कि अगर both pairs of opposite sides, so we have AB and basically CP. ये है आपकी one pair of opposite sides, right? And then you have AC and BP. अगर both pair of opposite sides, if they are parallel to each other, AB parallel to CP and AC parallel to BP, then we know that the quadrilateral दोस्तों is called a parallelogram because this is a proof, friends, जो हमने देखी है in our series 8 में, the last series जहाँ पे we talked about quadrilaterals and parallelograms. So now दोस्तों we have now got a parallelogram. ACPB is a parallelogram. अभी दोस्तों so what else can we tell? अगर आप गौर से देखोगे अभी, now BC is a diagonal, right? ये जो line है BC, that is a diagonal of our parallelogram ACPB, right? ये जो line BC है, it is a diagonal. So अभी दोस्तों हमें क्या मालूम है? Now we know that diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. So दोस्तों now so we say that CAB जो है CAB जो हमारी main triangle है CAB is congruent to triangle BCP. So ये जो दोनों triangle है दोस्तों so CAB and CBP या BCP ये दोनों triangle congruent है because BC जो diagonal है, diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. This is again another theorem दोस्तों that we have seen in our last series 8. We have actually proved these theorems, right? So हम कह सकते हैं कि ये दोनों triangle आपस में congruent है. Now दोस्तों आपको ये भी मालूम है from our earlier webisodes of this series 9 में कि जो congruent shapes होती हैं, चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो भी हो, कॉन्ग्रुएंट शेप्स की दोस्तों एरियाज सेम होती है, राइट? सो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP, यानी कि जो CAB जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP. दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, so दोनों की एरिया सेम है. सो दोस्तों व्हाट एल्स कैन वी टेल? सो अगर आप अभी देखोगे, चलिए लेट अस जस्ट क्लीन इट अप अ लिटिल बिट. अभी आप देखोगे दैट
CAB एंड BCP को अगर आप ऐड करते हो, बेसिकली वी गेट अ पैरेललोग्राम, राइट? सो एरिया ऑफ CAB प्लस एरिया ऑफ BCP दोनों कंबाइन करने से वी गेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ दोस्तों, अभी CAB प्लस अभी BCP के जगह आप उसे रिप्लेस कर दीजिए CAB से, बिकॉज वी नो, हमने अभी भी बात की है दैट बोथ BCP इज इक्वल, एरिया ऑफ BCP इज इक्वल टू एरिया ऑफ CAB, राइट? सो अगर अगर हमारे पास एरिया ऑफ CAB अगर इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCP, अगर ऐसी बात है जो अभी अभी हमने देखी है फ्रेंड्स, देन अभी इसके जगह वी बेसिकली रिप्लेस दिस बाय CAB. सो अभी दोस्तों वी हैव CAB, एरिया ऑफ CAB प्लस एरिया ऑफ CAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो यहां से दोस्तों व्हाट वी फाइंड आउट इज एरिया ऑफ CAB इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACPB. इसे कहते हैं दोस्तों आवर फर्स्ट कंडीशन. सो यानी कि दोस्तों हमें जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की एरिया के बारे में हमें ढूंढनी है CAB, हमने दोस्तों अभी पता की है अप टिल नाउ कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल CAB is equal to half the area of the parallelogram ACPB. So दोस्तों ये है exactly the halfway point in our proof. अभी what we can do, as you can imagine दोस्तों, we will now shift our attention from this to अभी the quadrilateral AQDB and triangle DAB में. So we are going to now shift our focus to those two. So यहाँ पे दोस्तों we have appropriately highlighted AQDB. So we are going to focus on this. So अगर आप इस quadrilateral को देखते हो दोस्तों, you will see that QD is parallel to CP. QD जो है, it is parallel to, actually QD is parallel to AB. This should be AB. QD is parallel to AB. Why? Because line L is parallel to AB and QD are basically points on line L. Similarly दोस्तों जो है AQ जो है आपकी, that is parallel to BD because this is by construction. So again दोस्तों we have both pair. So AQDB is such a quadrilateral जहां पे both pairs of opposite sides, that is QD and AB, ये है आपकी एक pair of opposite sides, right? QD and AB, and then you have AQ and BD. So यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं again, ये जो both pairs of opposite sides है, they are actually parallel to each other. So this is again a parallelogram. So AQDB is again a parallelogram. For the same reason, quadrilateral with both opposite sides parallel is a parallelogram. Now दोस्तों, so if you continue to move forward, आप देखोगे कि by the same logic again, you see that AD is a diagonal of the parallelogram AQDB, right? So now दोस्तों, in the real exam, आपको डेफिनेटली यू डोंट हैव टू डू दिस फैंसी हाईलाइटिंग एंड ऑल दैट, वो आपको करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे दोस्तों हम आपको समझाने के लिए वी आर एक्चुअली हाईलाइटिंग दीज पैरेललोग्राम्स सेपरेटली, बट एग्जाम में दोस्तों यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस. आप नॉर्मली कंस्ट्रक्शन जैसे करके करोगे, जैसे हमने आपको दो कंस्ट्रक्शन दिखाई है, यू आर गोइंग टू डू दोस कंस्ट्रक्शंस एंड आप जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं, यू आर गोइंग टू जस्ट राइट इट द सेम वे. ये जो शेडिंग है दोस्तों, हाईलाइटिंग है, this is just to make sure that you are able to understand it much more easily. So now similarly दोस्तों अभी AD is a diagonal in it is a diagonal of the parallelogram AQDB, or again by the same reason we can say the diagonal bisect parallelogram. So we know that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. So we can say these two triangles are congruent, that is DAB and QAD. These are congruent triangles. एंड हमें मालूम है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैव इक्वल एरियाज. सो हम कह सकते हैं अगेन नाउ DAB जो है दैट हैज द सेम एरिया एज बेसिकली AQD, राइट? नाउ फ्रेंड्स, एज यू कैन इमेजिन, अभी व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू हाईलाइट सेइंग दैट नाउ सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB बेसिकली इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQDB. So दोस्तों at this point आप नोटिस करोगे what all have we done. हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, इसे हम सेकंड कंडीशन कहते हैं. हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वहां पे दोस्तों हमने प्रूव की है द एरिया ऑफ CAB, राइट? एरिया ऑफ CAB, now that actually
is equal to half the area of parallelogram ACPB, right? Is half ACPB, राइट। और अभी दोस्तों ये है हमारी कंडीशन 1, और अभी दोस्तों कंडीशन 2 में हमने देखी है जो हमारी DAB है, DAB that is equal to half the area of parallelogram AQDB। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों हमने आपको पहले कहा था कि we want to write the area of each of these two triangles in terms of these two parallelograms that we have created by our construction, right? So दोस्तों now let us find out what we can do here। अभी दोस्तों आप नोटिस करोगे now parallelograms ACPB, यहाँ पे दोस्तों we have just got taken out all of the highlighting and all of that। So अभी दोस्तों आप नोटिस करोगे now area of parallelogram ACPB and area of parallelogram AQDB, now they are the same because the parallelograms, these two parallelograms, they have same base and they are in between same parallel lines। So दोस्तों हमारी जो थ्योरम थी in the last webisode 3, वहां पे we have proved कि अगर आपके पास दो parallelogram है with same base and between same parallel lines, so they actually have absolutely same equal area। So हम कह सकते हैं area of these two parallelograms are same। इसका मतलब यह है दोस्तों half the area of parallelogram ACPB is equal to half the area of parallelogram AQDB। दोनों साइड्स को we are just dividing by 2, and दोस्तों then अभी half of ACPB के जगह we can write area of triangle CAB, and similarly half of AQDB के जगह we are replacing that by area of triangle DAB। so एक में है CAB, एक में है DAB। so we see दोस्तों that area of triangle CAB is equal to area of triangle DAB। so दोस्तों this is what we wanted to prove, right? हम ऑलवेज ये प्रूव करना चाहते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। सो हमने प्रूव की दोस्तों कि जो CAB जो एरिया है, जो ट्राइंगल है, दिस एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CABP और CAPB, एंड हमने प्रूव की दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB जो है दैट इज एक्चुअली हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQDB। एंड देन दोस्तों हमने द रीजन हमने ये प्रूव की इसलिए दोस्तों बिकॉज हमें ऑलवेज मालूम है कि पैरेललोग्राम ACPB एंड पैरेललोग्राम AQDB दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड दे हैव द सेम बेस। सो इन दोनों के एरिया सेम है। सो फ्रॉम देयर दोस्तों वी कैन एक्चुअली कंक्लूड दैट एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स CAB एंड DAB आर एब्सोल्युटली द सेम एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। सो दोस्तों इट इज क्लियरली हम आपसे एग्री करते हैं दिस इज अ लॉन्ग प्रूफ, बट होपफुली दोस्तों यू आर सिस्टमैटिकली फॉलोइंग दिस अलोंग। अगर आपको किसी जगह में समझ में नहीं आई है सो वी एनकरेज यू टू गो बैक इन द वीडियो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप जो हमने डिडक्शन की है ऑफ दिस थ्योरम। एंड उसके बावजूद दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, लाइक वी ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द presentation, please do not hesitate to send us a note and we'll be more than happy to provide you with any clarification that you may have। So दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।